नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रवित हितारांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में तब हुआ जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। रूप को देखते ही अर्जुन के मन में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक शांत स्वरूप में आने की प्रार्थना की। उससे उन्हें रण कौशल की क्षमता का संज्ञान हुआ और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्तव्य परायणता, कड़ा अनुशासन, संवेदना और करुणा इस अनूठे संगठन की बुनियाद है। भारतीय वायुसेना भाग्यशाली रही कि उन्हें शुरुआत से ही अदम्य साहस वाले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र जैसे कर्तव्यनिष्ठ शूरवीर मिले। जय हिंद, जय भारत। Touch the sky with glory. Nabha Sparsham Deeptam. Myself, Tanuja Joshi, CTO, RN Public School. Respected Wing Commander Rai Sir, Mohit Sir, Principal Ma'am, our new Group Captain Akhilesh Chauhan Sir, all ANOs and all my dear cadets. First of all, I'll congratulate all of you. Happy Indian Air Force Day. Today we are celebrating 88th anniversary of Indian Air Force. Today my NCC cadets are conducting a special assembly on the occasion of Indian Air Force Day. So please enjoy it. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. Today I Flight Cadet Muskan Arora with regimental number UK19 JWF 157670 Unit 1 UK Air Squadron NC Pantnagar and Sub-Unit RN Public School. Today we NC cadets got the golden opportunity to conduct today's morning assembly on the topic National Air Force Day. Indian Air Force was established on 8th October 1932 under the British rule. Earlier it was known as the Royal Indian Air Force. Jai Hind, I Flight Cadet Shubham Thukral is here to present the thought of the day. Indian Air Force is like a mother, does work selflessly and never asks for anything in return. All of you, I Flight Cadet Virat Gumbar. Today I am here to justify the thought said by Shubham Thukral. Air Force is an ocean of innumerable sacrifices which works tirelessly and demands nothing from anyone. Jai Hind all of you. Morning to all of you. Today, we NCC cadets have got a golden opportunity to speak few lines on the topic Indian Air Force Day. So, I myself, Antriksh and Kashik, we both are here to tell you about the Indian Air Force Day. Indian Air Force Day was first started on 8 October 1932 under the British rule. Indian Air Force is also known as Bharatiya Vayusena. This day is celebrated with pride and honor at all the air stations all over the country. Supreme Commander of the Indian Air Force is the National Commander of Indian Military. From here, I will like to pass it to my friend Kashik. As he has already informed you much about it. Now, I will continue it. Indian Air Force achieved 4th rank amongst all the air forces of the world. President of India holds the rank of Supreme Commander of the Indian Air Force. Air Chief Marshal and Chief of Air is a 4-star officer. On 26 Jan 2002, Arjun Singh became one and only 5-star rank officer of the IAF. At last, I would end it by saying that I give a grand salute to the dedication and hard work of Indian Air Force. Jai Hind. वायुसेना का एक ही मकसद है, देश की रक्षा। उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. तुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी।
ले जा तू उखाड़ के जमीन Collective fully down, cyclic fully back. Now level with this, now helipad here. फुरजा तू ना झुकना कभी, तू ना झुकना कभी। झीले अपनी जिंदड़ी। ओए मार छड़पा, ओए चांद पे चढ़ जा। उड़ जा बन के आसमान दी परी। उड़ जा बन के आसमान दी परी। ESI, Jenny switch, VSI, throttle brakes. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा चला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे चला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे वो टुर जा तू ना डरना कभी ना घबरना कभी वो ले जा तू उखाड़ के जमीन फुर जा तू ना रुकना कभी तू ना झुकना कभी झीले अपनी जिंदड़ी वो मार छड़पा वो चांद पे चढ़ जा उड़ जा पड़ के आसमान दी परी उड़ जा पड़ के आसमान दी Flight Cadet Vidyanshi Vajpayee with regimental number UK19 JWF 157677 would like to end the assembly by making you aware of our new group captain sir, Mr. Akhilesh Chauhan. Also, I would like to fill a moment of pride in your life by making you remember Abhinandan Varthaman, who was captured by Pakistani forces, but still he was a very courageous man who encourages all. Also, our school represented Pulwama Attack Act as a mean of annual function. Jai Hind. जग में है एक देश हमको सबसे प्यारा कहते हिंदुस्तान इसको दिल हमारा जय हिंद जय भारत सबसे प्यारा